बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 8 मार्च है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस की। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस का मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जब अमेरिका के सदर जॉइंट सेशन से खिताब करता है हर साल। और इस साल ये इवेंट, ये एड्रेस और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए था, पूरी दुनिया की नज़रें इस खिताब पर इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात इसी साल 2024 में नवंबर के महीने में है। और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की वजह से जिस तरह की सिचुएशन है, यूक्रेन पर भी बात की अमेरिका के सदर ने, गजा की सूरत हाल पर, मसले फ़लस्तीन पर भी बात की, चाइना के साथ जो कंपटीशन है उस पर भी बात की। और इसके अलावा इंटरनेशनल एरिना के अलावा अमेरिका के सदर जो बाइडन के दौर में इंटरनल जो मामलात हैं अमेरिका के, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह के इख्तलाफात हैं, और ये जो हाउस था इसकी सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा। आपको नज़र भी आ रही होगी कि यहाँ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन के पीछे कैमला हैरिस बैठी हुई थी और दूसरी जानिब बैठे हुए थे माइक जॉनसन जो कि रिपब्लिकन हैं। और इस तकरीर के दौरान कैमला हैरिस जो हैं वो दर्जनों मरतबा उठ कर क्लैपिंग कर रही थी और वहाँ पर जो रिपब्लिकन स्पीकर हैं वो अपनी नशिस्त पर बैठे रहे और जो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं या फिर जो लॉ मेकर हैं वो भी बैठे रहे। यहाँ पर तल्ख जुमलों का तबादला भी होता रहा, कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया। बहरहाल ये स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस मैं आपके सामने रखूँगा। इसके जो इम्पॉर्टेंट नुकात हैं, जो इम्पॉर्टेंट बातें अमेरिका के सदर जो बाइडन ने की, वो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा और फिर उन नुकात पर हम बात भी करते रहेंगे। और जो हमारे से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, यूक्रेन है, फ़लस्तीन का मामला है, चाइना के साथ जो भी मामलात हैं उन पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जाहिर है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था 1.5 घंटे, तकरीबन 1.5 घंटा, 1 घंटा 27 मिनट तवील ये खिताब था जिसका आगाज़ अमेरिका के सदर जो बाइडन ने किया यूक्रेन जंग से, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से क्या बात की और बहुत इंपॉर्टेंट बातें यूक्रेन जंग को लेकर आजकल जो गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं उनका जवाब भी अमेरिका के सदर जो बाइडन ने किस अंदाज से दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Tonight, I come to this same chamber to address the nation. Now, it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. And yes, my purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. But Ukraine can stop Putin. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that it needs to defend itself. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस का आगाज़ किया यूक्रेन जंग से, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का जिक्र किया और ये कहा कि पुतिन यूक्रेन में रुकने नहीं वाला, बल्कि पुतिन आगे बढ़ेगा और यूक्रेन पुतिन को रोक सकता है अगर हम यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद, मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहें। ये रिपब्लिकन्स से मुखातिब थे जहां पर बिल पेंडिंग है और बिल रिपब्लिकन्स की जानिब से अप्रूव नहीं किया जा रहा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यहाँ पर जो इन दिनों जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर गर्दिश कर रही है कि क्या नेटो ममालिक अपने फौजी यूक्रेन के अंदर भेजेंगे, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने खिताब के आगाज़ में ही क्लियर कर दिया कि हम अपने फौजी नहीं भेजेंगे यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन को ज़रूरत भी नहीं है। यूक्रेन को ज़रूरत है असलहे, गोले बारूद की, हमारी मदद इमदाद की, और वो डिपेंड करती है, अमेरिका के सदर ने कहा
کہ وہ امداد ڈیپینڈ کرتی ہے ریپبلکنز پر، اور پھر کس طرح سے کرٹیسائز کیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, "Do whatever the hell you want." That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. America is a founding member of NATO, the military alliance of democratic nations created after World War II to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. Come here, stand up. Welcome. Welcome, welcome, welcome. And they know how to fight. Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen. I say this to Congress, we have to stand up to Putin. Send me a bipartisan national security bill. History is literally watching. History is watching. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk, emboldening others to do what they wish to do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. We must be honest. The threat to democracy must be defended. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی، یو کانٹ لو یور کنٹری اونلی وین یو ون. آپ صرف تب اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے جب آپ جیتتے ہیں، بلکہ یہاں پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین جنگ کو لے کر، پوتن کو لے کر جس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اس پر بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو ممالک کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں کی تھی انہوں نے باتیں جس طرح سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن بات کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو ممالک جو جی ڈی پی کا 2% دینا ہوتا ہے، انہوں نے نیٹو کے اس الائنس کو اپنے ڈیفنس بجٹ پر انہوں نے 2% سپینڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس پر تھوڑا سا پینچ ٹائٹ کر رہے تھے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے جی ڈی پی کا 2% سپینڈ نہ کیا تو ہم مفتے میں تمہاری ہیلپ نہیں کریں گے، بلکہ میں رشیا کو کہوں گا کہ نیٹو ممالک پر حملہ کر دے، اور ان ممالک پر تو ضرور حملہ کرے جو اپنے جی ڈی پی کا 2% سپینڈ نہیں کر رہے، تو ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں کہ ہم تمہیں رشیا سے بچاتے رہیں گے. اس کانٹیکسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی. بہرحال امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسے لے لیا اینٹائی نیشنلزم قسم کا کانٹیکسٹ دے کر. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوب کرٹیسائز کیا اور یہ کہا کہ وی کینٹ واک اوے، ہم نہیں بھاگ سکتے یوکرین جنگ سے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے بینگ فاؤنڈنگ ممبر آف نیٹو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیٹو کے اس الائنس کو محفوظ بنائیں جس کا مقصد جنگیں چھیڑنا نہیں ہے بلکہ امن ہے. اس الائنس کا مقصد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وی ول ناٹ واک اوے، ہم بھاگیں گے نہیں. اب آپ تو آلریڈی بھاگ چکے ہیں اور یورپ بالکل خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، یوکرین خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت لگے پڑے ہیں. کہیں سے $200، کہیں سے $100، کہیں سے کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم دے دیتا ہے. اب خود جو فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون ہیں، یورپین یونین ہے، وہ کس طرح کے فیصلے لینے پر مجبور ہیں. تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا یہ جوش و خروش تو اچھا تھا لیکن یہ ریئلسٹک نہیں تھا، کیونکہ پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنی نشست کے اوپر، مائک جانسن جو US ہاؤس سپیکر ہے،
वो रिपब्लिकन है और इसने 2 हफ्तों के लिए इजलास को छुट्टी दे दी थी ताकि यूक्रेन का जो बिल है वो हमें मंजूर ना करना पड़े। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बेसिकली अपने आगाज में जो यूक्रेन का जिक्र किया, रशिया का जिक्र किया और डोनाल्ड ट्रंप को जो क्रिटिसाइज किया, उसका मकसद ये था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं और हमें यूनाइटेड होकर यूक्रेन को डिफेंड करना है, क्योंकि यूक्रेन को डिफेंड करने का मकसद है नेटो को डिफेंड करना। गजा की सूरत हाल पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जिस तरह की बातें की मैं आपको सुनवा देता हूं। बहरहाल बुज़दिल कहकर बुलाया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने हमास को, हमास के मुजाहिदीन को, और उसी तरह की बातें इसराइल को लेकर की। सोल्यूशन क्या बताया, जो भी गजा के अंदर जो सूरत हाल है, जो क्राइसिस हैं, जो इमदाद के मसाइल हैं, उनका क्या सोल्यूशन बताया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You know, as we manage challenges at home, we're also managing crises abroad, including in the Middle East. I know the last 5 months have been gut-wrenching for so many people, for the Israeli people, for the Palestinian people, and so many here in America. This crisis began on October 7th with a massacre by a terrorist group called Hamas, as you all know. 1,200 innocent people, women and girls, men and boys, slaughtered after enduring sexual violence. The deadliest day for the Jewish people since the Holocaust. And 250 hostages taken. Here in this chamber tonight are families whose loved ones are still being held by Hamas. I pledge to all the families that we will not rest until we bring every one of your loved ones home. We also We will also work around the clock to bring home Evan and Paul, Americans being unjustly detained by the Russians and others around the world. Israel has the right to go after Hamas. Hamas ended this conflict by releasing hostages, laying down arms, could end it by releasing the hostages, laying down arms, and surrendering those responsible for October 7th. But Israel has Israel has an added burden because Hamas hides and operates among the civilian population like cowards, under hospitals, daycare centers, and all the like. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. This war has taken a greater toll on innocent civilians than all previous wars in Gaza combined. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. Thousands and thousands of innocent women and children, girls and boys, also orphaned. Nearly 2 million more Palestinians under bombardment or displacement. Homes destroyed, neighborhoods in rubble, cities in ruin. Families without food, water, medicine. It's heartbreaking. I've been working nonstop to establish an immediate ceasefire that would last for 6 weeks to get all the prisoners released, all the hostages released, to get the hostages home and ease the intolerable and humanitarian crisis and build toward an enduring, something more enduring. The United States has been leading international efforts to get more humanitarian assistance to Gaza. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. No U.S. boots will be on the ground. A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day. And Israel must do its part. Israel must allow more aid into Gaza to ensure humanitarian workers aren't caught in the crossfire. And they're announcing they're going to have a crossing in northern Gaza. To the leadership of Israel, I say this: humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation
is a two-state solution over time. And I say this as a lifelong supporter of Israel. My entire career, no one has a stronger record with Israel than I do. I challenge any of you here. I'm the only American president of Israel in wartime. But there is no other path that guarantees Israel's security and democracy. There is no other path that guarantees Palestinians can live in peace with peace and dignity. And there's no other path that guarantees peace between Israel and all of its neighbors, including Saudi Arabia, with whom I'm talking. Creating stability in the Middle East also means containing the threat posed by Iran. That's why I built a coalition of more than a dozen countries to defend international shipping and freedom of navigation in the Red Sea. I've ordered strikes to degrade the Houthi capability and defend U.S. forces in the region. As Commander-in-Chief, I will not hesitate to direct further measures to protect our people and our military personnel. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने वहीं से स्टार्ट किया 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर से पीछे नहीं ये जाते, 7 अक्टूबर से पीछे ये नहीं जाते। यही तो मसला है इनका। जो मसला फ़लस्तीन है वो 7 अक्टूबर से राइट टू सेल्फ डिफेंस से स्टार्ट होता है। इन्होंने भी 7 अक्टूबर से स्टार्ट किया और ये कहा कि बहुत जुल्म किया हमास के मुजाहिदीन ने, मासूम इसराइलियों के साथ बहुत जुल्म किया, उनके गले काटे, उनके बच्चों के साथ जुल्म किया, उनकी ख़वातीन का रेप किया। और हमास के मुजाहिदीन ने जो कुछ किया तो उस पर राइट टू सेल्फ डिफेंस तो बनता है। और अब वो बुज़दिलों की तरह, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि हमास के मुजाहिदीन बुज़दिलों की तरह टनल्स में छुपे बैठे हैं, सिविलियंस को शील्ड बनाकर। अमेरिका के सदर ने यहाँ पर जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं उनकी शहादतों का भी जिक्र किया और अमेरिका के सदर ने यहाँ पर जो एड के मसाइल हैं उनका जिक्र करते हुए अमेरिका के सदर ने वही अनाउंस किया जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने दूसरे चैनल के ऊपर आपको बताया था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन अपने इस खिताब के दौरान अनाउंस करेंगे कि वो एक टेम्परेरी पोर्ट बनाने जा रहे हैं गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए। ये जो आर्जी बंदरगाह है ये इमदाद के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने ऑर्डर्स इन्होंने कहा कि मैंने जारी कर दिए हैं और ये आर्जी बंदरगाह बना दी जाएगी ताकि गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को जो इमदाद है उसके मसाइल इस तरह से फेस ना करने पड़े जिस तरह से इसराइल के रास्ते बंद करने की वजह से या फिर इमदाद के ट्रक्स को टारगेट करने की वजह से जो मसाइल इन दिनों फेस कर रहे हैं गजा के मासूम फ़लस्तीनी। तो मेरे इस सलूशन के बाद ये मसाइल अमेरिका के सदर ने कहा कि सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्यों अनाउंस किया अमेरिका के सदर ने और ये आर्जी पोर्ट बनाने का क्या मकसद है, उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ बात की है। मैं एंड स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अमेरिका के सदर ने मसले फ़लस्तीन पर भी बात की और अमेरिका के सदर ने जो ओवरऑल पीस है स्पेशली सऊदी अरब का नाम लिया अमेरिका के सदर ने और ये कहा कि ईरान के खिलाफ किस तरह से इकदामात किए जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि मिडल ईस्ट के अंदर पीस हो और मिडल ईस्ट के अंदर अमन के लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब और इसराइल आपस में हाथ मिला लें और ईरान के खिलाफ उठ खड़े हों तमाम के तमाम अरब कंट्रीज़ इसराइल के साथ मिलकर, तभी पीस हो सकता है मिडल ईस्ट के अंदर। हौसी मुजाहिदीन के हवाले से जिक्र करते हुए अमेरिका के सदर ने कहा कि हम ये हमले जारी रखेंगे। अगर हमारे फौजियों का ख़तरा हुआ या फिर इंटरनेशनल रूट को ख़तरा हुआ रेड सी के अंदर तो हमारी जानिब से ये हमले जारी रहेंगे। स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर तालियां बजती रहीं अमेरिका के सदर जो बाइडन के खिताब के दौरान। अमेरिका के सदर ने चाइना के साथ अपने कंपटीशन का भी जिक्र किया और अमेरिका के सदर ने कहा कि अमेरिका चाइना के साथ कंपटीशन चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। लेकिन दूसरी साइड पर चाइना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चाहता है। जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर जिस तरह से चाइना ने हालात ख़राब कर रखे हैं, उन हालात को देखते हुए हम अलायंस हमने बहुत तगड़ा बना लिया है। भारत का भी नाम लिया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने और उस रीजन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं जापान, साउथ कोरिया समेत उनका भी नाम लिया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने और अपनी हेल्थ का भी जिक्र किया। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और वो अपने डिफरेंट इवेंट्स के दौरान देखा गया कि किस तरह की हरकतें अमेरिका के सदर जो बाइडन करते हैं,
तो यहाँ पर अमेरिका के सदर ने जस्टिफाई करने की कोशिश की, अपनी सेहत को उन्होंने जस्टिफाई किया और ये कहा कि मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि मैं इंतखाबात ना लड़ सकूं। और उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि मैं सेनेटर था, फिर मैंने क्या क्या किया मुल्क के लिए। फिर कमला हैरिस की जानिब इशारा करके कहा कि देखो पहली वाइस प्रेसिडेंट खातून है, और इस तरह की जो अपनी अचीवमेंट्स हैं वो गिनवाते हुए अमेरिका के सदर ने अपनी सेहत को डिफेंड किया और ये बताया कि आने वाले सदारती इंतखाबात तो मैं ही लड़ूंगा। और ट्यूसडे को अमेरिका के सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टाकरा भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी होंगे और अमेरिका के सदर जो बाइडन काफ़ी पुरजोश नज़र आए, लेकिन ये जोश बिल्कुल खोखला है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई यूक्रेन जंग को लेकर, ये टोटली रिपब्लिकन्स पर डिपेंड कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल को लेकर ये जितनी मर्जी आर्जी पोर्ट्स बनाते रहें, पूरी दुनिया के सामने रियलिटी है। और अमेरिका पूरी दुनिया में गजा के इस क्राइसिस को लेकर और फ़लस्तीन के मसले को जिस तरह से अमेरिका के सदर जो बाइडन हैंडल कर रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका के सदर जो बाइडन को मालूम है कि ये इनका आखिरी खिताब भी हो सकता है स्टेट ऑफ द यूनियन का। और ज़बरदस्ती ये सदारत की सीट पर अपनी उम्र के बावजूद, इतने ज़्यादा उम्र रसीदा होने के बावजूद, ये अपनी कुर्सी से चिपक कर ना सिर्फ इंटरनेशनल एरिना के अंदर गलत ड्राइव कर रहे हैं अमेरिका को, बल्कि इंटरनली भी जो टेक्सास का मामला है, जो इंटरनल मामलात हैं, वहाँ पर भी अमेरिका के सदर जो बाइडन का ग्राफ जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि अमेरिका के आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है यूक्रेन जंग से मुतल्लिक। पहले मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो के साथ शामिल कर ली जाए, लेकिन वो स्टोरी क्योंकि उस पर हिस्ट्री पर हमें बात करनी पड़ेगी उस वीडियो के अंदर, तो वो सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस टॉपिक पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।